फ्रेंड्स, आज का जो लेक्चर है वो है फंक्शनल एनालिसिस के नॉन लीनियर स्पेस पर, खास करके लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पर। कैसा ट्रांसफॉर्मेशन? कंटिन्यूअस ट्रांसफॉर्मेशन। उसमें भी सेट ऑफ ऑल बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पर है। बी एन एन डैश इज द set of linear transformation from non-linear space n to n dash। ऐसे जो भी मैपिंग होगी उस सारे मैपिंग के कलेक्शन को बी एन एन डैश से डिनोट किया जाता है। यानी अगर T1, T2, T3, T4 ऐसे ये सारे मैपिंग हैं, ट्रांसफॉर्मेशंस हैं, तो सारे के कलेक्शन को हम बी एन एन डैश से डिनोट करते हैं, है ना। तो थ्योरम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये, अक्सर MSc में पूछी जाती है और जो नेट गेट की तैयारी करते हैं उनके लिए भी है कि लेट एन 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 डैश भी नॉन लीनियर स्पेस स्पेसेज। एन और एन डैश क्या है? नॉन लीनियर स्पेसेज है। और बी एन एन डैश जो है सेट ऑफ ऑल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। ट्रांसफॉर्मेशन कहाँ से कहाँ तक? तो एन से एन डैश में। देन बी एन एन डैश इटसेल्फ ए नॉन लीनियर स्पेस। तब हमें प्रूव करना होगा कि बी एन एन डैश अपने आप में एक नॉन लीनियर स्पेस है, जिस पर जो ऑपरेशन है या ट्रांसफॉर्मेशन है किस तरह का है कि पॉइंट वाइज लीनियर ऑपरेशन। कैसा? तो टी प्लस यू एक्स बराबर टी एक्स प्लस यू एक्स। तो टी एक्स भी, टी और यू दो यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन है और दोनों का ऑपरेशन जो है वो भी बी एन एन डैश में बिलोंग करेगा, बी एन एन डैश में बिलोंग करेगा, बी एन एन डैश में बिलोंग करेगा। और उस पर स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ द फंक्शन या ट्रांसफॉर्मेशन वो भी कंडीशन लागू होगा। ये चूंकि लीनियर स्पेस के लिए हम जानते हैं वेक्टर स्पेस में दो ऑपरेशन काम करता है, क्या? वेक्टर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ये दोनों कंडीशन अगर इस पर काम कर जाएगा तब बी एन एन डैश क्या होगा? एक लीनियर स्पेस हो जाएगा। और उसको नॉर्म डिफाइन कर देंगे। नॉर्म कैसा है कि नॉर्म टी बराबर सुप्रीमम ऑफ टी एक्स सच दैट नॉर्म एक्स इज इक्वल टू 1 एंड एक्स बिलोंग्स टू 1। नॉर्म टी का मतलब हुआ कि सारे जो भी आप ट्रांसफॉर्मेशन लेते हैं उसका जो मॉडुलस होगा या उसका जो लेंथ होगा वो क्या, उसमें जो सबसे बड़ा होगा सुप्रीमम, वही नॉर्म ऑफ टी कहलाएगा, जहां x का जो लेंथ है 1 से छोटा है और x बिलोंग करता है डोमेन सेट n में। फर्दर इफ n डैश इज बनाक स्पेस, अगर को डोमेन बनाक स्पेस हो जाए तो सेट ऑफ ऑल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम n टू n डैश जो है वो भी बनाक स्पेस ही होगा। बनाक स्पेस मतलब एक कंप्लीट मैट्रिक स्पेस होगा। बनाक स्पेस में एक कंडीशन लग जाती है, क्या? बनाक स्पेस का वे क्या है कि पहले वो लीनियर स्पेस होगा, फिर नॉन लीनियर स्पेस होगा, फिर उसमें कंप्लीटनेस अगर प्रूव कर देंगे तो वो बनाक स्पेस हो जाएगा। जबकि मैट्रिक स्पेस का जो डिफिनीशन है उसमें जो कंप्लीटनेस प्रूव करते हैं तो कंप्लीट मैट्रिक स्पेस हो जाता है। तो अगर ये एन डैश बनाक स्पेस है तो बी एन एन डैश भी बनाक स्पेस होगा। तो पॉइंट हम 1 बाय 1 करके चलेंगे। पहले हमको प्रूव करना है कि बी एन एन डैश इटसेल्फ नॉन लीनियर स्पेस। हमको नॉन लीनियर स्पेस प्रूव करना है। तो पहले तो हम लीनियर स्पेस प्रूव करेंगे, उसके बाद जाएंगे नॉन लीनियर स्पेस पर, तब जाएंगे उसके कंप्लीटनेस पर। तो प्रूफ में वी नो दैट लिखेंगे। वी नो दैट, हम जानते हैं कि कोई सेट है, कोई सेट S है where S is the set of all linear transformation from n to n dash। अगर ऐसा है, linear transformation है, तो वो जो है वो set of all linear transformation is itself a non-linear space। वो भी linear space होता है। अब उसमें कब, यदि ये ऑपरेशन लगा दिया जाए तो लीनियर स्पेस हो जाएगा। we know that the set of all linear transformation from n to n dash is itself
ए लीनियर स्पेस और उस पर जो ऑपरेशन लागू होगा विथ ऑपरेशन टी अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई इजकल टू अल्फा टी एक्स प्लस बीटा टी वाई। यही है इसका जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का जो कंडीशन है, वो ये प्रूफ कर देगा, तब ये हो जाएगा ऐसा। दूसरा, अगर बी एन एन डैश एक लीनियर स्पेस है तो इसके लिए हमको ये प्रूफ करना होगा कि बी एन एन डैश इज सब स्पेस ऑफ एस। तो वी हैव टू प्रूव दैट बी एन डैश is a subspace of S, where S is a non-linear space, where S is a set of all linear transformation is a linear space. Let T1, T2 belongs to B and N dash. T1, T2 B एन एन डैश का मेंबर है, तब जरूर जब ये B क्या है, B एन एन डैश इस सेट ऑफ बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, यानी ये ट्रांसफॉर्मेशन बाउंडेड होंगी, इसके जो भी एलिमेंट लिए जाएंगे ट्रांसफॉर्मेशन वो सभी बाउंडेड होंगे। देन there exists K1, K2 such that norm T1x is less than equal to K1 norm x and norm T2x is less than equal to K2 norm x. Let alpha beta be scalars हैं, then alpha T1 plus beta T2 x norm of alpha T1 plus beta 2 x is equal to norm of alpha T1 x plus norm of beta T2 x is less than equal to mod alpha norm T1 x plus mod beta norm T2 x. But T1x is less than equal to K2. T1x less than K2x, K1x. So alpha T1 plus beta T2 x is less than equal to mod alpha K1 norm x plus mod beta K2 norm x, which is equal to mod alpha K1 plus mod beta K2 norm x है। For this shows ये लीनियरिटी प्रॉपर्टी को भी शो करता है और बाउंडेडनेस को भी शो करता है। सो इट इज लीनियर एंड बाउंडेड both, that is T1, T2 are linear and bounded, और बी एन एन डैश तो वैसे ही ट्रांसफॉर्मेशन को रखता है जो कि लीनियर हो, बाउंडेड हो। दस T1, T2 belongs B and N dash,
and so B and N dash is a linear space. And alpha T1 plus beta T2 belongs to B and N dash. Alpha T1 plus beta T2 is equal to this, which is bounded and linear. So this belongs to B and N dash, which is scalar multiplication and vector addition. Yes, it is the member of B and N dash. And B and N dash is linear space. Now we prove that B and N dash is a normed linear space. This is normed linear space. Normed linear space. With norm T बराबर supremum of norm Tx such that x belongs to n and norm x is less than or equal to 1. To prove the norm linear space, the first condition of norm linear space is T is greater than 0. We have to prove. So norm T is equal to supremum of norm T such that x belongs to x, 1, but norm Tx is greater than or equal to 0 because norm is length and length is non-zero, greater than. So norm T is greater than or equal to 0. The N1 is verified. ठीक है, हो गया लिखा हुआ, नोट कर लीजिए. For N2
therefore n2 norm t बराबर सुप्रीमम ऑफ norm tx by norm x such that not equal to 0 and x belongs to n. If norm t बराबर 0, then supremum of norm tx by norm x such that x is not equal to 0 and x belongs to n is equal to 0, or supremum of norm tx by norm x is equal to 0, then supremum of norm tx is equal to 0, or norm tx is equal to 0 implies norm t is equal to 0. So t is equal to 0, so tx is equal to 0, and tx is equal to 0, so t is equal to 0. T is equal to 0, so t is equal to 0. This implies norm t is equal to 0. N3, let if t comma u belongs to b n n dash, then t plus u will supremum of norm t plus u x such that norm x is less than equal to 1 and x belongs to n, which is equal to, or norm t plus u which is equal to supremum of norm tx, x belongs to n, and norm x is less than equal to n, plus, one step more, supremum of norm tx plus ux, x belongs to n, and norm x is less than equal to 1 बराबर supremum of norm tx, x belongs to n, plus supremum of norm ux such that x is less than 1 and x belongs to n is equal to norm t plus norm u by definition of norm of t belongs to supremum of tx, x belongs to x is less than equal to 1 and x belongs to n, so norm t plus norm u. Thus n3 is satisfied. Now n4, pick alpha in a scalar such that norm of alpha t x, alpha t equal to supremum of norm of alpha t x such that x belongs to n and norm x is less than equal to 1, or alpha t is equal to supremum of
mod alpha norm Tx such that x belongs to n and norm x is less than 1. Which is equal to mod alpha into supremum of Tx such that x belongs to n and norm x is less than equal to 1, which can be written as or norm alpha t is equal to mod of alpha norm of t by definition of norm. Thus n4 is satisfied. Hence b and n dash is a normed linear space. Normed linear space. It is a normed linear space. B and n dash is normed linear space. तो नोट कर लीजिए. Now, lastly, we have to prove that B and n dash is complete. If n dash is complete, B and n dash is complete if n dash is complete. For this, suppose n dash is complete. N dash is complete. And let Tn n is equal to 1 to infinity is a Cauchy sequence. In Bn n dash, then by definition of Cauchy sequence, norm Tm minus Tn tends to 0 as n tends to infinity, Mn tends to infinity, Mn tends to infinity. Take it as equation 1.
Now for each x belongs to n, we have not t and x minus t and x, which is equal to, which can be written as tm minus tn norm of tm minus tnx, which is less than equal to norm tm minus tn norm x. But from equation 1, norm tm minus tn tends to 0 as n tends to infinity. Applying this rule here, we have norm tmx minus tnx tends to 0. That is tn n is equal to 1 to infinity is a Cauchy sequence in n dash, because tm and tn are the member of n dash. Why? To each x belongs to n, we get tx belongs to n dash. So for xn, we get tnx. N dash. Since n dash is complete, then every Cauchy sequence in n dash converges to a vector tx belongs to n dash, that is converges to tx. Very important things it is. This defines a mapping T of n to n dash. Now we show that T is linear and bounded. T is linear and bounded. हम क्या कर रहे हैं, वो समा बांध रहे हैं कि T को बी एन डैश का मेंबर होना है. T को बी एन डैश का मेंबर होने के लिए लीनियर, बाउंडेड और कंप्लीटनेस शो करना होगा. बनाक स्पेस बनने के लिए इसको बी एन डैश को बनाक स्पेस बनने के लिए लीनियर, बाउंडेड और कंप्लीटनेस तीनों प्रूव करना होगा. It is linear and bounded if x and y belongs to n and alpha beta be scalars, then
टी अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई बराबर लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी टी एन अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई और टी अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई बराबर लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी टी एन ऑफ अल्फा एक्स प्लस टी एन ऑफ बीटा वाई which can be written as alpha tnx plus beta tny limit which is equal to, but tn converges to t, so tn converges to tx and beta ty. Thus t is linear. हमने t को लीनियर बना दिया. T is linear. Now we have to prove that T is bounded since norm of tx बराबर norm of limit tnx shortly, which can be written limit of norm tnx which is less than is equal to limit of norm tn norm x and norm tn. Limit of norm tn must be less than is equal to supremum of norm tnx norm x such that norm x is less than is equal to 1. Suppose this is equation 2. We know that mode of norm Tm minus norm Tn, mode of norm Tm minus norm Tn is less than is equal to norm Tm minus Tn. But Tm minus Tn, norm of Tm minus Tn is 0 as n tends to infinity. So modulus of tends to 0. Tends to 0 as Mn tends to infinity by equation 1. Therefore,
Tn is a Cauchy sequence of real numbers and hence convergent and a convergent sequence is bounded, thus Tn is a bounded sequence so there is a number k greater than or equal to 0 such that supremum of norm T n is less than or equal to k, तो बाउंडेड है तो लेस देन इक्वल टू के हो जाएगा. दिस इक्वेशन 3. This shows that T is bounded और जब ये बाउंडेड हो जाएगा T तो बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर में आ जाएगा तो T बिलोंग्स टू बी एन एंड डैश. अगर ये T बी एन एंड डैश के अंदर में है, अगर ये T लिमिट हो जाए और बी एन एंड डैश के अंदर में हो जाए किसी सीक्वेंस टी एन का तो कंप्लीट हो जाएगा. यानी अगर कोई कॉची सीक्वेंस बी एन एंड डैश में है, जो कॉची सीक्वेंस किसका है, ट्रांसफॉर्मेशन का सीक्वेंस है, और वो अगर कन्वर्ज करता है किसी पॉइंट टी पर जो टू बी एन एंड डैश में बिलोंग करता है, तब बी एन एंड डैश क्या हो जाएगा, एक कॉची सीक्वेंस कन्वर्जेंट सीक्वेंस हो जाएगा, तो वो कंप्लीट हो जाएगा. So we finally show that Tn converges to T. Tn converges to T. Then let epsilon greater than 0 be given then there is a positive integer